Good afternoon, student. In this lecture of digital image processing, we discuss about the image formation model. In the previous lectures of digital image processing, we discuss about what is the image equation, their phases, and next we discuss about the image formation model or the image equation. So, what is an image that we already discussed about many times? That is the two-dimensional function fxy, and the value or the amplitude of f, that is the function at spatial coordinate xy, is a positive scalar quantity. So when an image is generated from a physical process, its value are proportional to the energy radiated by the physical source. So as a consequence, fxy must be non-zero and finite. It means that the 0 is less than fxy, that is less than infinity. When we capture any image, then we are capturing something in the presence of the illumination energy, that is the source energy. So something is to be captured, that is always a non-zero. So any image is represented as a function fxy. So when we capture any image, that can be something, that can be any object, so its value is non-zero and finite. So there are the number of quantities are to be included. So the function fxy may be characterized by the two components. First component is the amount of the source illumination incident on the scene being viewed. When we capture some image, then source energy जो होती है वो, फॉर एग्जांपल सनलाइट जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, देन that object is to be captured and in the presence of the source energy. And second one is the amount of the illumination reflected. जब वो लाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन जो होती है, the reflected object that has to be captured, that has to be seen through the sensor. So these are called the illumination and the reflectance components, denoted by IXY for the illumination, X and Y, and R reluctance X and Y respectively. The two function combine as a product to form fxy. दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इल्यूमिनेशन एनर्जी एंड द रिफ्लेक्टेड एनर्जी सोर्स, इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेड जो होती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल जो वैल्यू आती है दैट बिकम्स एन इमेज. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इमेज, दैट इज एफ एक्स वाई इज the multiplication of the two factors, that is two function, that is ixy and rxy. I is for the illumination and r is for the reflectance. So when 0 is ixy, illumination function is greater than 0 and less than infinity, and is less 0 r x y, that is the reflectance function, that is greater than 0 and less than 1, whose value is always less than 1. So this is the condition for both the illumination and the reflectance. So when the rxy is equals to 0, when the function of reflectance value is 0, which means that the total absorption, when rxy equals to 1, which means the total reflectance. Clear? We call the intensity of a monochrome image at any coordinate x comma y the gray level. Gray level क्या है? Intensity value or the pixel value जो है of the image at that point. So we have to check the intensity of that point. So the intensity of that point can be calculated by calculating the reflectance value. So that is L equal to fxy. The interval of L, that is the gray level, ranges from 0 to L minus 1, where L equals to 0 indicates the black color and L equals to 1 indicates the white color. जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट, अगर रिफ्लेक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 है, विच मीन्स डैट जो सोर्स एनर्जी आ रही है वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है.
the total area or total object is to be reflected by that light. So the value of when the L equals to 0 indicate the black, the total absorption जब light नहीं पड़ रही, जब 0 है, then it is indicated by black. अगर लाइट पूरी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, सोर्स लाइट पड़ रही है, देन इट इंडिकेटेड बाय 0. So all the intermediate values are shades of the gray varying from black to white. So the reflected values are always from the black to white. जितना कवरेज एरिया होगा और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उस पर डिपेंड करेगा. So we can represent a simple image by a function fx y. There are some number of coordinate values, function values. Any image is a combination of number of pixel, and each pixel have some value. There are some coordinate values. So when x and y and the amplitude value of f are all finite discrete quantity, we call that image a digital image, that we already discussed. The field of digital image processing refers to the processing of the digital image by means of a digital computer के through, digital sensor के through, किसी भी हार्डवेयर के थ्रू, सेंसर के थ्रू हम कैप्चर किसी भी इमेज को कैप्चर करते हैं, उसको हम बोलते हैं. देन इफ द k इज द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, here is the point that when we are considering that k is the number of bits per pixel, then the number of gray levels is an integer power of 2. When we have something, we have any image and we have to calculate how number of bits per pixel, how many number of pixels are to be performed. Then any image, for example, we are talking about the types of an image. Then in types of image we discuss about 8-bit image, 256 pixel values are to be used. How these values are to be covered? By taking the power of 2. So 2 power, the number of bits, that is 8, the 2 power 8 become, the value becomes 256, which is the possible gray level values for the 8-bit and image. So this can be formed by this: when an image have k2 gray level, then it is the common practice to refer to a image as a k-bit image. Clear? So for example 256 possible gray levels हो सकते हैं किसी 8-bit image के, that we already discussed. Therefore the number of bits required to store or digitize an image of the size m into n is b equal to m into n into the bits per pixel, that is k. When m equal to n, then b becomes the number of bits. B is the number of bits, total number of bits required to store or digitize an image becomes n square भी ले सकते हैं जो m square, क्योंकि वैल्यूज दोनों की इक्वल है, into k is the bits per pixel. So these are some terms that are very beneficial when we are calculating the pixel values. So another concept is zooming and shrinking. Zooming may be viewed as the oversampling and shrinking may be viewed as the undersampling concept. So zooming is the method of increasing the size of a given image. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल कैमराज में कोई भी पिक्चर्स होती हैं, आप उसको जूम करते हैं, जैसे जैसे जूम करते जाते हो वैसे वैसे पिक्सल्स जो हों बस वो क्या है स्कैटर करते जाते हैं. सो जूमिंग रिक्वायर टू स्टेप क्रिएशन ऑफ द न्यू पिक्सल लोकेशन एंड असाइनिंग द न्यू ग्रे लेवल वैल्यूज़ टू दोज न्यू लोकेशन. जैसे जैसे हम जूम करते जाएंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स जो ब्लैंक स्पेस होगी वहाँ पर क्या है पिक्सल्स जो है वो कॉपी होते जाएंगे. जो कॉपी होते जाएंगे उसको हम ग्रे लेवल वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं. ग्रे लेवल वैल्यूज़ कैसे असाइन होगी, जब पिक्सल्स कैसे असाइन होंगे, जो नियर बाय होंगे, जो नियर बाय होंगे. फॉर एग्जांपल रेड के नियर बाय है तो रेड कलर पिक्सल्स जो होंगे वो असाइन हो जाएंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ द नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, जो अभी अभी डिस्कस किया. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड एंड बेसिकली मेक्स द पिक्सल बिगर.
दिस इज फॉर द जूमिंग प्रोसेस. जूमिंग के लिए क्या है, फर्स्ट वन इज द नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेटेशन. द इंटेंसिटी ऑफ अ पिक्सल इन द न्यू इमेज इज द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑफ द ओरिजिनल इमेज. दोनों की सेम होगी. बाय एनलार्जिंग 200%, जब हम जूम कर देते हैं 200% पे, देन वन पिक्सल में बी एनलार्ज टू अ 2x2 एरिया of 4 पिक्सल विद द सेम कलर एज द ओरिजिनल पिक्सल. दो कॉपी हो जाएंगे नियरेस्ट नेबर, एंड देन जैसे जैसे इनलार्ज करेंगे वो सेम कलर को शो करता जाएगा. बाय लीनियर इंटरपोलेशन होती है, इट कंसिडर द क्लोजेस्ट 2x2 neighborhood of known pixel values surrounding the unknown pixel. So it then takes a weighted average of these 4 pixels to arrive at its final interpolated value. This results in much smoother looking images than the nearest neighbor. तो जो भी अननोन जो पिक्सल वैल्यूज पता भी नहीं है, वो उनके नियर बाय जितने होंगे वो क्या होंगे, कंबाइन करके उसको भी अपना ही कलर या रिफ्लेक्शन या इंटेंसिटी वैल्यू दे देगा. Then this is the example for the zoomed images, that is the 128 into 128 को हमने किस में यूम किया, 1024 into 1024 में. 64 into 64 को किस में यूम किया, 1024 पे. 32 into 32 को आगे जूम किया. तो जब जूमिंग प्रोसेस होती है तो पिक्सल जो है वो ऐसे शो होते हैं. दैट भी यू ऑलरेडी नो दैट. सो नेक्स्ट वन इज द इमेज श्रिंकिंग. तो इमेज श्रिंकिंग में क्या है, दिस इज डन इन अ सिमिलर मैनर as just described for zooming. The equivalent process of pixel replication is the row column deletion. And for example, to shrink